sales if there is no promotion and considering that 10% increment hai. Okay, we calculated these baseline sales. Are you able to understand this? Hello? Yes, ma'am. So are you able to understand this baseline sales? Many of you were able to do this. Okay. So what is the difference? And these were the sale numbers of 2017 when sales promotion was announced in Q2. तो अगर हमारी baseline sales पे जाए by year on year trend, that is 10% increment. Can you please put yourself on mute? Yes. So if we go by 10% increment, that is baseline sales, तो ये वाले numbers आने चाहिए थे. 2017 में हमने promotion किया, basically Q2 में हमने announce किया, and Q3 में हमने promotion किया, और हमारे ये numbers आए. Okay, when we are saying about sales impact, so many of you have what you have done is जो increment था और उसी month का ही तुमने वो sales impact calculate किया. But when you have also learned this concept that when we announce sales promotion, एक dip आता है previous month में और एक dip आता है उससे next month में. So when we are calculating the sales impact, it should include these 2 month sales also. So the total units increase will be 31 units. 121 होता अगर कोई promotion नहीं हुआ, 120 हुआ जब promotion हुआ. Okay, 152 without promotion और यहाँ पर 110. So यहाँ पे -42, -1, ये 81, ये -7. So total units or the net impact of this promotion is 31 units. Okay, so this was the solution for your first case study. Second is I asked for, to plot this volume and sales volume and consumer promotion over time. So I'm not showing you that graph. That graph was like simple, very easy in Excel, but these are the findings. So we already observed this. The sales trend, there was this mild upward trend. There was seasonality also, January, February. Yes, Bharat, tell me. Ma'am, can you move back to the case study one? This? Ma'am, the case study part. Ma'am, how can we calculate this, ma'am? Ma'am, next slide. Ma'am, in this, ma'am, how we have calculated -1, -42, 81? This is nothing. ये जो आपका baseline वाला है, इसमें से ये वाला subtract कर दिया. ये. और मैम ये 120, 110 कहाँ से आया मैम? 120, 110 तो ये तो numbers दिए हुए थे. अच्छा मैम, ठीक. ठीक है, ये जो ब्लैक में है ये सारे नंबर्स दिए हुए थे. बेसिकली ये सारे नंबर्स दिए हुए थे. ओके, और ये हमें इम्पैक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये 81 नहीं बोलेंगे इम्पैक्ट में -42 और -7 भी आएगा. एक्चुअली -1 नहीं आएगा, 32 यूनिट्स आने चाहिए. बट अगर हम ओवरऑल देखें तो देन इट्स लाइक इफ आई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो 31 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है जब हम प्रमोशन नहीं करते हैं और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके 10% इंक्रीमेंट कर लेते हैं, दैट इज बेसलाइन सेल्स. और जब हम प्रमोशन कर रहे हैं, so there is like net increment of these 31 units. So that is the net impact of promotion. So this was first case study, and this I asked you to do. And there was this monthly seasonality and consumer and trade promotions effect. You were able to see this also कि जब sales promotion हमारा जिस month में हम कर रहे थे उस month में हमारे numbers sales के भी बढ़ रहे थे. Okay, in that same month. So next was this case study. इस case study में 2-3 चीजें थी which you have not answered correctly. First thing is regarding units. Units में कुछ problem थी, so go back and check your solution whether it has like correct units or not. So अगर हम बोलते हैं कि 1 unit increase in consumer promotion,
और हमारे कंज्यूमर प्रमोशन इज ऑलरेडी इन $1000, सो 1 यूनिट इंक्रीज इन कंज्यूमर प्रमोशन बोले या $1000 स्पेंड ऑन कंज्यूमर प्रमोशन इज द सेम थिंग. सो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 65,000 यूनिट्स ईच मंथ. ये हमारे ट्रेंड से आया. सो ट्रेंड क्या देता है, ईयर ऑन ईयर या फिर मंथ ऑन मंथ जो भी इंक्रीमेंट होता है. सो यहाँ पर ट्रेंड वाले नंबर से हमें पता चला 16,500 यूनिट्स ईच मंथ बिकॉज सेल्स इज in 1,000 units. Okay. Next is sales volume in April is 3785. April में sales unit 3785,000 units higher than December. December की sales पता है कितनी थी? Can you tell me? December की sales कितनी होगी? What are these? What are these? ये तो किया था ना तुमने ये केस स्टडी. मैम इसमें से 4212 माइनस कर देंगे, जो सेल्स आई है इसमें से तो दिसंबर की आ जाएंगी. नो, सेल्स वॉल्यूम 5155 सॉरी. अगर मैंने ये बोला सेल्स वॉल्यूम इन अप्रैल इज 3785,000 यूनिट्स हायर देन दिसंबर. तुम भूल रहे हो जब एडवर्टीजमेंट में हमने ये कवर किया था, इंटरैक्शन इफेक्ट्स में हमने कवर किया था, जिसे भी हमें डमी वेरिएबल को जिसे हम काउंट नहीं करते हैं उसको बेस लाइन करते हैं बेसिकली, उससे रेफरेंस. अगर बोलें कि अप्रैल में 3785 ये 1000 यूनिट्स हायर है देन दिसंबर. 3785 units higher than December. December is this baseline. Your intercept is baseline. So April की sales अगर interpret करें, so it is 3,785,000 units higher than December. डिडक्ट हो जाएगी ये वैल्यू? नहीं, डिडक्ट नहीं होगी. हम पूछ रहे हैं कि दिसंबर का पता करने के लिए ये वैल्यू जो टोटल आए उसमें से डिडक्ट हो जाएगी ना मैम? राइट, दिसंबर की वैल्यू तो ये रही. दिसंबर की वैल्यू ये है. यस मैम. इससे अगर कोई नेगेटिव आता है तो वो दिसंबर की वैल्यू से इतने 1000 यूनिट्स कम है. अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो इतने 1000 यूनिट्स ज्यादा है. सो अप्रैल सेल्स वॉल्यूम इन अप्रैल इज 3,785,000 यूनिट्स हायर देन दैट ऑफ दिसंबर. ओके. यस मैम. नाउ I also asked this extra dollar spent or extra or 1 unit increment. 1 unit increment बोले या फिर an extra $1,000 spent on consumer promotion. It increases your sales by 1.73 thousand units in same month. तुम लोगों ने क्या किया है? Impact of promotion 1.73 units in same month increment तो है. But we also checked एक lag consumer वाला भी हमने variable create किया था. It reduces क्योंकि जो प्रमोशन हम उस मंथ में कर रहे हैं उसका हमें इम्पैक्ट नेक्स्ट मंथ में भी होता है इन टर्म्स ऑफ डिप इन आवर सेल्स. तो एक एक्स्ट्रा 1 यूनिट और इफ आई से एन एक्स्ट्रा 1,000 spent on consumer promotion will increase sale by 1.73 thousand units in same month, but it will reduce sales by this much 1,000 units in next month. Okay, Randhir, yeah, you raised hand. इसको मैम क्वार्टर वाइज अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल कर सकते. तो एवरेज ले लो, एवरेज ले लो, क्वार्टर वाइज कर लो. बस ये देख लो कि अगर सीजनैलिटी तो तुम्हारी मंथ वाइज है तो तुम क्वार्टर वाइज वो सीजनैलिटी को कैसे कवर करोगे. यहाँ पर सीजनैलिटी ज्यादा डेफिनेट हमें मंथ वाइज दिख रही थी. यू कैन ट्राई दैट. क्वार्टर में मर्ज कर दो, इसे ऐड कर दो, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे कर भी सकते हो. बट देन यू हैव टू सी कि सीजनैलिटी और वो वाले हमारे ट्रेंड्स वो कैप्चर हो पा रहे हैं या नहीं. एंड क्वार्टर वाइज तुम्हारा नो मैम, क्वार्टर वाइज भी तो वर्क होता है. सॉरी व्हाट? क्वार्टर वाइज भी तो वर्क हो रहा है इसमें, मतलब वो सब कुछ दिखा रहा है जो मतलब कितना सीजनैलिटी कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो सब भी. कर सकते हो. ट्रेंड भी तुम्हारा वो 1+2+3+4 एक क्वार्टर का आ जाएगा.
समझ रहे हो ये ट्रेंड की जो हमने मंथली 1+2+3 4 ऐसे करे थे, तो Q1 का मतलब ये सब ऐड हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हो, क्वार्टर वाइज भी कर सकते हो, इट्स ईयरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टर वाइज भी देख सकते हो। बट सीजनैलिटी जो होती है ना, वो ज्यादा मंथ ऑन मंथ बेसिस हमें इसमें देखने को मिली। इफ यू फील कि योर प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दैट जिसमें क्वार्टर वाइज डिफरेंस आता है, देन यू कैन डू दैट। ओके, थैंक यू। all right. So volume impact, next question was what was the volume impact of an extra $1 spent? Extra $1 spent पे 1.73, these are the sales unit, that is volume 1.73 effect था positive, plus per minus 0.81 negative था. So these number of packages, that is volume impact कितना होगा. And I also gave you this margin number also, the profit that they were making 2.20 per package. Okay. और सेल्स प्रमोशन का इम्पैक्ट हमें ये पता चला, इट इज 0.91 पैकेज. इतने नंबर्स से सेल इंक्रीज हो गई है बेसिकली. तो हमारा ये $2 का नेट इम्पैक्ट आया. एंड इफ आई चेक ROI कि $2 मुझे सेल्स प्रमोशन के बाद मिला, पर मैंने $1 का कूपन भी डाल दिया उसमें. सो नेट इम्पैक्ट इज 100%. ओके, $2 मुझे टोटल मिले आफ्टर रनिंग दैट प्रमोशन. $1 मेरा खर्च हो गया इन कूपन. सो बेसिकली मुझे $1 ही वापस मिला. So what do you think? What is the profit? And can we say कि ये $1 ही हमारा profit है sales promotion के regarding? What are the recommendations that you think you should give to this company? No answer. What do you think? $1, $2 मुझे मिले, $1 मैंने कूपन में डाल दिए, and then I get like $1. That is the incremental contribution of this. That is the ROI, 100% ROI. So what do you think? Should we go for this promotion? Should we not? Or should it be short term? If it is bringing in different kind of customers, then it's going to be a positive impact, or what? Ma'am, we should go for it, but try it for a short term and then see the results and then move for the long term. Okay, so yeah, we definitely need to go for short term. And the second thing is that we can see like what kind of customers it's bringing in. So it's not just the point of $1 impact. Okay, the thing is that when you bring in new customers, there is acquisition cost also involved. And maybe, you should not look at, short-term profit that, these inducements as sales promotion is bringing in, that is this $1 coupon. But you should also think that, I am gaining $1, that is a net impact, but it's also increasing my sales, and these sales maybe are happening because of the right customers. It's because of new customers that are adding up. So they will give me, sales in future, and that can be one of the impact, which we can't, these can be those positive incremental impact, which we can't, quantify right now, but it will come in future. So are you able to understand this case study? Yes, ma'am. That's the reason we should go for it. As a company or a brand. Mm-hmm. So next thing is we'll talk about logistic regression. So what is logistic regression? Hope you have gone through that video. What is logistic regression? From the regression we perform on the categorical variables, like Okay. yes or no. We have to take a decision on yes or no, true or false, or do we, is it satisfied or not, something like this. So you said something about binary classification basically. You mentioned about classification, and you said something about binary, that is, or categorical, or basically 0 or 1.
So what is this? This is, you said something about regression. So there is some dependent and independent here. Ma'am, on the basis of this logical regression, we Independent can take variable. certain decisions whether the customer would buy this product or not buy this product. Yes. So basically this category, 0 or 1, you know, yes or no, whether a customer will buy or whether a customer will not buy. So these, you know, when you're, this is your dependent variable or independent variable? Buy, not buy. This is your, Variable basically for Ma'am, this is dependent. Ma'am, this is this is Buy or dependent not buy. variable because this is what we have to predict. exactly. This is your dependent because you have to predict this, that whether a customer will buy or whether a customer will not buy. Okay. So next thing in this logistic regression is, let's see, you know, we'll do one case study also, and through that case study, you know, I'll give you that data and I'll tell you, you know, about the course and everything. You can get that R&D file and I'll share that today itself. But the thing is, I'm not going to get into logistic regression estimation today, but I'll talk about more about this concept, you know, setting this foundation so that you can, every day you can, you know, whenever there is session, you can go back to that R&D file and step by step we will cover all the concepts. So this is a classification problem. Okay, we are classifying it into, if I say it's a binary classification, whether a customer will buy or not buy, and it has various applications. You know, in healthcare, in marketing, in banking. So can you please tell me any example across, like how it can be, what kind of problem you can see of logistic regression, you know, in say in banking, in something regarding credit cards. Whether the person, the loan, the customer will repay the loan or not. Yes, whether he will pay or not, whether he will default or not. Okay. And other type of things that even in HR analytics, it can be used, whether a person will be promoted or not. In terms of healthcare, any example regarding healthcare? A person is having diabetes or not. Person is having a certain illness or not, yeah, having diabetes or not, or if a medicine is able to cure the patient or not, and Will the vaccine be successful or not based on its trials? yeah, whether the vaccine is successful or not based on the trials. And it can also be used in terms of like emails, whether the mail is spam or not. Yes. So any other application which you feel that can be used where we can use logistic regression? And we can also use it if we are launching a new product. Will it be successful in the market or not? Can we So that, use? yeah, if you have that parameters to say that this means successful, these 3 4 things are like you are getting that number of frequency, that number of margin, and all these variables you take as independent, and you prepare that model and say, okay, these things are coming that, and you fit in that model, and if you can build that criteria, then you can do that as. Generally we don't do it like that or direct as a direct question, but we, it's like more of indirect way of interpreting. So hope you all have gone through this first video, which is overview of logistic regression, and to go through all these concepts, we'll cover all these concepts. Okay, what is probability, what is sensitivity, what kind of questions you can answer, everything we'll do that. So like you said, logistic regression is a classification algorithm. You know, it predict a binary outcome. And this binary outcome is dependent variable because we have to predict that dependent variable. Basically, whether a customer will buy or not buy, has diabetes or not, will default or not, this yes, no, 1 or 0 kind of situation. So these are the examples that we discussed. I also share this video with you. Do go through this. I'm not going through this now, but you know, go through this. I'll post some questions. You'll be able to understand those questions through this.
Okay, so the question is, what is the difference between linear and logistic regression? Why can't we do linear regression? Why do we need to go for logistic regression? Any thoughts? Any thoughts on this? Because the linear regression, we cannot do the categorical variables. Yeah, we can't club it in 0 and 1. So if I predict sales, or if I say, whether a person will purchase or not, it will not give me that value. Rather, it will give me some, say 81.764, some continuous number. Okay. It's not giving me 0 and 1, whether it will buy or not. That binary classification, linear regression can't do that. I'll show you in this thing only. If I, in this case study only, just 1 second. Yes. Ma'am, we can say that in linear regression, based on the values, we ourselves analyze that person will buy or not. We can predict the score in linear regression, and in logistic we can say that whether he will pass or fail. Or okay, so actually we can't, because okay, for some cases we can, and then there comes a problem. I'll tell you that as well. If I plot that in a logistic regression, if I try running linear regression in that problem, I'll explain that as well. But one problem is that, this is a linear, what is this? Are you able to understand what is this? This is purchase, this is recency, and I try to run linear regression. Okay. But what is the problem here is, ये linear regression में, if I increase my value, this is 1 and this is 0. Okay. If I increase my value, say if I predict the purchase based on some value of recency, that is 250. अगर 250 से मैं check करती हूँ, then my linear regression वाली this line will go beyond 1. Okay, and here it will come negative. So which is not the case. We want it to be in 0 or 1. Okay, so this is not giving us the right, the result, right result. It's not telling us whether a person will purchase or not purchase. And there are other things regarding this. Say if I go with, if I say this is linear regression. Okay, this is my x-axis, this is my y-axis, and I do this. And this is the equation of my linear regression. Okay. Say if I have to give, I try to plot linear regression, and I say this is the value of 0. Sorry. This is the value of 0, and this is the value of 1. And my problem is that I have to tell whether a person is obese or not based on weight. Okay, so here x-axis is my weight, and if the value comes as 0, I'll say it's not obese. And if it comes 1, I'm saying it's obese. So what I can do, I can plot these numbers, or the data points. Maybe some data points will come here, and maybe some data points will come here, and I can run linear regression, this kind of line, and I'll say, for example, there is this person whose weight is 75 kgs, and I plot it here, and I'll say, okay, the value is coming as 0.5. So let's calculate it as obese. I'll come on this point, why 0.5, what is threshold value and everything. And let's, say that this person is obese. This is 75 kg. Okay. But if I draw another point that is, say
60 kgs, or I'll again draw a point and I'll say 0.3. So it is going to be not obese. I can say that. Can't I? Yes, ma'am. But what we do in linear regression is we fit the line. Okay. So maybe, you know, there comes one more indicator, like someone is 110 kg, one outlier kind of thing. Okay. This point is somewhere here. Okay. And what we have to do in that case, we need to change our line. You know, the model will suggest to change the line so that it can go through these outliers also. अब क्या होगा अगर आउटलायर हम ऐड कर देते हैं, हमारी ये रिग्रेशन की लाइन शिफ्ट हो जाती है. और रिग्रेशन की लाइन क्या कहेगी, अगर 75 kg को अब मैं प्लॉट करूंगी तो वो ये इस नंबर पे आ जाएगा, विच इज लाइक 0.3 पे. एंड 0.3 तब तो हमने बोला था कि दिस इज ओबीस. ओके, क्योंकि ये 0.5 पे आ रहा था. अब हम कहेंगे इसे नॉट ओबीस बिकॉज ये 0.3 पे आ रहा है, विच इज रॉन्ग. सो देयर आर, you know, high error rates if we do this using linear regression, and it doesn't fit into the 0-1 model. So there is a better model, and which is called logistic regression, and this is the reason we go for logistic regression. Also, I showed you in that कि हमारा value, for example, when I ran regression in this data set, I'll talk about this data set as well. तो मेरा जो regression value था, अगर मेरा 250 अगर कुछ value आता है, तो मुझे अपनी ये line extend करनी होगी, and to meet the projection point here, it means it is something which is greater than 1, which is not making any sense, and even less than 1 is also like not correct here. So these are the two reasons why we can't do linear regression on this category. बट जो लाइन हम ये पॉइंट्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं बेस्ट फिट लाइन होती है, तो हम इस पे ये थोड़ी डिपेंड करता है कि अगर हम पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे तो वो नेसेसरी कि वो पॉइंट से भी क्रॉस करे, मैक्सिमम पॉइंट से क्रॉस होने चाहिए. तो जैसे आप डेटा ऐड करोगे, जैसे आप एक मॉडल में ऐड करोगे डेटा, यस मैम, तो आपका मॉडल तो चेंज होगा. जैसे आप लाइन तो मैक्सिमम पॉइंट से जानी चाहिए ना. वो डेटा अगर हम ऐड करें तो ये नेसेसरी तो है नहीं कि जो ऐड करे उससे जानी चाहिए. हाँ, नहीं तो फिर आपका रेजिडुअल बढ़ जाएगा. वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है. पर अगर तुम्हारे बहुत सारे आउटलायर्स इधर ही आ गए हो, 100 का सैंपल में तुमने ट्रेनिंग डेटा पे तुमने रिग्रेशन रन किया और तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर है, तो वो तुम्हारा अब you know, ये एक कंडीशन थी जब हमारी ये लाइन थी बेस्ड ऑन दैट डेटा पॉइंट्स. अगर इतने सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं, देन यू विल रन रिग्रेशन अगेन ऑन ट्रेनिंग डेटा. तो तुम्हारा ये मॉडल की लाइन जो है वो बेस्ट फिट लाइन ये नहीं देगी ना, वो बेस्ट फिट लाइन ऐसे करके दे देगी. तो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी, अब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम होगा. इस मॉडल में स्टेबिलिटी नहीं है, यही मतलब होना ना. हाँ, इस मॉडल में स्टेबिलिटी नहीं है. अगर हम अगर तुम लीनियर रिग्रेशन करते हो ना, तो तुम ना, क्योंकि डेटा वैसे ही है, तो तुम्हें वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे तुम एक पॉइंट वो बोल रहे हो, व्हाट इज योर कंसर्न इज कि हम तो चेंज नहीं करते ना मॉडल. अगर वो लीनियर रिग्रेशन में होता, डेटा उस टाइप से होता, तो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं थी. ओके, तो वो तुम्हारी ये बेस्ट फिट लाइन से, क्योंकि हमेशा ये इस टाइप की लाइन होती है, तो वो बेस्ट फिट लाइन पे ही हमारे डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती. दिस इज जस्ट because we are going for categorical dependent variable, because we want to understand whether a person will purchase or not, and we can't get that kind of you know, solution, and running linear regression or multiple regression is not correct in this sense. So this is the case study for a catalog company. Imagine you are an online catalog company or a direct marketing company, and you have lot of data, especially on these three variables, that is recency, frequency, monetary value. Yeah, RFM values, see, you can calculate a lot of things.
And in this case study I am basically using it to, these are my independent variables. So in this case, I'm just using it to predict purchase. Okay, these independent variables, through these, I'll predict purchase. So I'll show you how the data is looking. What does these values mean? So recency means how recently the person bought from the company. Frequency, kitna frequently khareedta hai, and monetary value, how much a person spends with us either over time or year. So इस कैटलॉग कंपनी का बिजनेस प्रॉब्लम था कि ये सारे अपने कस्टमर्स को कैटलॉग प्रोवाइड करे या फिर ये देखे कि वो कौन से कस्टमर्स हैं जो एक्चुअली परचेज करते हैं. ओके, सो बेसिकली रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू से अगर मैं ये प्रेडिक्ट कर पाऊं और पास्ट में कुछ लोग हैं जिन्होंने परचेज किया है, मैं उससे एक मॉडल बिल्ड करूं, दैट इज दी, और उनकी जो परचेजेस है ये, दिस विल बी माय ट्रेन डेटा. I train my data using logistic regression. I calculate the probabilities and I transform it into 0 and 1 as in purchase and not purchase. और इस ट्रेन डेटा से मुझे अगर ये प्रेडिक्ट कर सकूं कि which customer will buy and which customer will not buy, basically मैं उन customers को ही send करूं catalogs which are going to purchase. Isn't it? Yes, ma'am. Are you able to understand this? This online catalog company sells catalogs. Not sell, basically, send catalogs so that customers can purchase product. It sends catalog so customers can purchase product. तो कंपनी का तो यहाँ पर एक अमाउंट यहाँ पर जो है, कंपनी is spending here in sending catalog. Okay, so there's no point of sending catalogs. Rather, I would say it's a kind of loss for a company if I am spending money on sending catalogs to these customers and these customers are not buying my product, because ultimately my profit is going to come from the sale of that product. So what if I could predict that these are the customers who are not going to buy, who are not going to purchase my product. So let's not focus on these customers. Send the catalog to those who will actually purchase my product. And how I'm doing this is through this RFM value. These are my independent variables. It's like regression only. Independent variables से आप dependent predict करते हो. Same thing like regression only. Logistic regression is like much similar to regression, but only thing is here dependent variable will come as 0 and 1. And let's see what is the 0 and 1 and how it comes. So basically these are the three users. We will see, we'll predict who is going to purchase. We'll see how responsive are consumers to these marketing actions, basically whether they are purchasing or not, and we will see churn before it happens, that these customers will not purchase. We'll cover all these things. Okay. So I have just 5 minutes. So this is a data set, the training data set. So I have recency, frequency, and monetary value and purchase. Always remember whatever we are going to predict, okay, that वेरिएबल विल बी प्रेजेंट इन ट्रेनिंग डेटा सेट, बट जो हमारा टेस्ट डेटा सेट होगा उसमें कौन सा वेरिएबल, ये सब वेरिएबल्स होंगे, आईडी, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू, और हमारा परचेज वैल्यू वाला वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज टेस्ट डेटा सेट का परचेज वैल्यू हम प्रेडिक्ट करेंगे, लाइक वी डिड इन रिग्रेशन. ओके, दैट रोड ट्रिप वाला डेटा सेट, डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is something we will do in logistic regression. So this is the data. I'll share this train data set and test data set as well. I have already covered this, why we can't do regression and why the better model is logistic regression, because it converts in 0 and 1 value. What is this kind of transformation? What is this 0 and 1 value? Basically logistic regression क्या होता है? It's a logic model, which is like ये linear regression की equation है. Hello? Yes, ma'am. तो ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, एंड दिस लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं.
ट्रांसफॉर्म कैसे कि इसको एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शो करते हैं एज log of p by 1 minus p. दिस मीन्स log of p by 1 minus p. अब हमारी जो ये प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी, एंड ये प्रोबेबिलिटी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमने इसका एक्सपोनेंशियल लिया, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने करी, और टू मेक द प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 से कम करने के लिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है मैम, 0 to 1 maximum 0 to 1 एग्जैक्टली। तो 0 से कम ना हो, बेसिकली पॉजिटिव हो, इसलिए हमने इसका एक्सपोनेंशियल ले लिया, दैट इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और 1 से कम हो उसके लिए हमने क्या किया, इसे डिवाइड बाय सेम वैल्यू प्लस 1 कर दिया। मैम ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो, ये 1 और इसकी वैल्यू कम वाले कैसे लिया? Okay, so these are the transformation that is done in this model. Okay, you don't have to like derive this equation, all those things, but it's like easier to understand. हमारे पास ये वैल्यू थी, this is linear regression, ठीक है? इस linear regression, sorry, multiple regression, recency, frequency, monetary value, and this utility of choosing to buy. This is something like that, utility of choosing to buy. जिसे y equals to mx plus c वाली इक्वेशन ही है ना मैम ये? exactly. तो उसको y को हमने log p by 1 minus p करा, p by 1 minus p, that is odds of log, basically probability, p means probability of success, और 1 minus p means फेलियर की। probability of failure, exactly. तो हमने यही किया कि log p by 1 minus p में उसे लिख दिया, this thing only. अभी ये linear regression ही, sorry, multiple regression ही है, okay? अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, बिकॉज हमारी प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन लीनियर, इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेदर अ पर्सन विल बाय और नॉट बाय, ओके? इन प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हमारा सॉल्यूशन आएगा। सो वी अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी कैन बी बिटवीन 0 and 1। अब इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि 0 और 1 में आए, बेसिकली नेगेटिव ना हो, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया, दैट इज फर्स्ट थिंग। This is the first transformation कि हमने इसे exponential ले लिया, this is the probability of purchase। और second thing is कि 1 से ज्यादा ना हो, तो इसे हमने डिवाइड कर दिया उसी वैल्यू से, e to power y और whatever it be, और 1 से ऐड कर दिया। बेसिकली पर अगर ये अपने आप ही मैम, ये अपने आप ही आएगा व्हेन यू लॉग आप उधर लगाओगे ना, log p 1 minus p, और उस साइड भी आप लॉग लगाओगे तो इट विल अपने आप ही आएगा मैम, ये आपको +1 करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ही what you are saying कि हाँ, मतलब ये exactly that's why this is probability of purchase and this is also probability of purchase, so this will come। बट मैम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज जो है -∞ से +∞ हो जाता है, तो अगर फिर log 0 to 1 कैसे हो जाएगा? log लगा दे तो ना, पर अगर एक्सपोनेंशियल डिवाइड यहाँ पर ये वैल्यू है, बट यहाँ पर डिवाइड भी तो कर दे उसी वैल्यू से। ये हमारी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू तो इससे डिवाइड हो जाएगी ना, ये वाली जो वैल्यू है। आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर इसमें। ये वाली जो वैल्यू है, सी दिस इस वैल्यू को लिया, यस मैम, वैल्यू को से इट्स x, so x by x plus 1। नो मैम, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो e पे पावर x या e पे पावर y, मतलब e पे जो है कोई एक वेरिएबल होता है जिसका रेंज जो है -∞ से +∞ होता है। अगर दैट में हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें लॉजिस्टिक फंक्शन के बारे में बता रहा था और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कहा कि अगर लॉजिस्टिक फंक्शन रहता है तो वो -∞ से +∞ की ओर जाता है। अगर ये जो है ना, ये आपका लॉजिस्टिक फंक्शन है। यस मैम, है ना? यस, और ये जो है ये आपका लॉजिस्टिक मॉडल है, लॉजिस्टिक मॉडल हो गया ये। हाँ, तो इसका रेंज जो लॉजिस्टिक मॉडल का रेंज जो है 0 to 1 होता है। हाँ, और उस फंक्शन का रेंज जो है -∞ से +∞ होता है। अच्छा,
बट दिस इज लॉजिस्टिक फंक्शन. इसे लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं या इसे लॉजिस्टिक मॉडल भी कहते हैं, विच इज दिस. एंड इसका रेंज 0 to 1 ही हो, बिकॉज हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन करा. एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1. पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ वो खरीदेगा, देन इट विल बिकम 1. या फिर वो नहीं खरीदेगा, इट विल बिकम 0. So check whatever you are saying कि ये वाली values कैसे आई. I'll also check what you are saying 0 to infinity कैसे, but this is what the logistic function does. Okay. मैम ये मैम log लगाने के बाद whenever you तो पहले तो हम ये exponential function of this b recency, b frequency और b monetary divide by 1 है, तो अगर जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, +1 हो जाएगा. और मैम यही मैम लॉजिस्टिक फंक्शन के अंदर फिर उसके बाद मैम जब एक चेन रूल होता है इसी के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर. Okay, so can you please explain it like in next class, like what exactly से, और तुम करके देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल तुमने लॉग पे लगाया मैम, बट डेरिवेशन तो आएगा नहीं ना मैम. Yeah, derivation will not come. That's why I just try to skip that part. Otherwise एक्सपोनेंशियल अगर लॉग पे लगाते हैं तो भी तो इन्फिनिटी भी शो करता है. नहीं, एक्सपोनेंशियल लॉग पे लगाने जरा देखना क्या होता है. नो मैम, अगर हम कैलकुलस में जब एक्सपोनेंशियल में लॉग लगाते हैं तो वो इन्फिनिटी को शो करता है, इन्फिनिटी या 0 को. तो 0 अगर किसी भी चीज से डिवाइड होता है तो या तो वो 0 होता है या तो इन्फिनिटी हो सकता है. ओके, कुछ भी. हाँ, जस्ट गो थ्रू दिस अगेन एंड यू विल गेट ये वाली वैल्यूज दोनों चेक करना. ओके, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगाया, फिर लॉग लगाया, क्या किया, एंड देन वी कैलकुलेटेड दिस. लॉग पे एक्सपोनेंशियल लग गया तो इट बिकम्स p, एंड बिकॉज इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज, सो 1 minus p will become 0. Exponential of 0 is 1. Whatever the calculation is, I'm not going into that. ठीक है, but the thing is that you will come into this is important actually. What you have to take from this is that this is how we derive equation, but not get into that. Basically the thing is this is the logistic function. तो y equals to mx plus c के जगह हम probability of purchase देख सकते हैं. instead of getting that continuous sales की value, यहाँ पे हम probability of purchase. This is how you are predicting a dependent categorical variable, and this is the equation. Okay, so R में हम ये बहुत easily करेंगे, and you can go through all these things, and we'll see that how logistic regression estimate how to read this data and everything. And basically you take this GLM function. तो जो मैंने मॉडल अभी बताया, दिस इज GLM. यहाँ पर जैसे लीनियर में हमने LM फंक्शन यूज किया था, generalized linear model we use this. And what is that GLM? Basically तुम्हें थोड़ा understanding हो background की, that's why I discussed all this. Otherwise you have to just use this GLM function instead of LM in logistic modeling. Okay, so are you able to understand up to this point? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. यस मैम. सो हम क्या करेंगे अब, इसमें हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, और फिर हम क्या करते हैं, आई जस्ट कवर वन मोर पॉइंट. हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं. बेसिकली वही जो तुम्हारा लॉजिस्टिक का ये जो फंक्शन है, दिस इज प्रोबेबिलिटी. ओके, और प्रोबेबिलिटी निकाल के दिस इज लाइक योर sigmoid curves. This is 1, this is 0. 1 means purchase, 0 means not purchase. And हम कुछ ऐसे probabilities निकालेंगे, and based on 0 and 1, based on threshold. अगर मैं कहती हूँ कि 0.5 का मैं threshold set करती हूँ, तो जिसकी भी value 0.5 और 1 के बीच में होगी, मैं उसे 1 number दे दूँगी. Basically they'll purchase. और जिसकी भी threshold value 0.5 से कम होगी और 0 तक होगी, उसी में वैल्यू दे दूंगी 0, which means they will not purchase, they will not buy. And this is how I'm going to categorize. Okay, so basically मैम फिर एक्यूरेसी इस मॉडल की कितनी होगी?
हाँ, ये एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड, जैसे लिनियर रिग्रेशन या मल्टीपल में हमारा आर स्क्वायर था, व्हाट वी यूज कंफ्यूजन मैट्रिक्स हियर, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी, व्हाट इज एक्यूरेसी, विल डू काई स्क्वायर आल्सो। एक मॉडल हम लेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड भी कैलकुलेट करेंगे, एंड एक मॉडल हम लेंगे जिसमें विल नॉट टेक एनी ऑफ दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सिर्फ ये वैल्यू लेंगे, और एक मॉडल लेंगे जिसमें हमारी ये सारी वैल्यूज होंगी, एंड वी विल सी व्हाट इज डेविएंस, रेसिडुअल डेविएंस, वो सब हम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, एंड हाउ टू चेक लाइक वेदर मॉडल सिग्निफिकेंट, वेदर मॉडल इज गुड, व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कितने प्रेडिक्ट करेक्ट करे, कितने प्रेडिक्ट गलत करे, ऑल दीज थिंग्स वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ओके, but are you able to understand it till now, till you know the point that I discussed, like this log function, threshold, and all these? I have given just a brief, you know, overview of this. We'll do everything step by step. Okay. And if you have any queries regarding this regression wala, then do let me know, or you can post on group. If you have any queries regarding this thing, but please go through the solution. I'll share this solution as well, so you should be able to understand कि units क्या थी. Units में तुम्हारा problem ना हो कि ये इतने units हैं, is it 1000, it is 100, it's 1062, or it's 16, or it's 16,000. so वो वाला मुझे लगा कि थोड़ा problem था. Otherwise you were able to solve this. Anything else you want to say? Anything regarding this assignment? Or so ma'am, like this is only the advantage of logical regression, that all the points are on the graph. We don't have to create like different lines. You don't have to create? Ma'am, it is not created two lines there. All the points were plotted on the same graph like this, S1. Yes. So yes, we will see also कि अगर ये वाले points यहाँ पर है, then we threshold of 0.5. So ये वाले points as 1 ही calculate हो जाएंगे. And also we can differentiate ना, like what we have to give the probability is 1 or 0. We can easily differentiate. If it is the pointer is lower, then it would be we can assume that the probability is 0. Yes, you can classify it. Clear cut दो होगा, purchase या not purchase. Yes. Purchase या not purchase. 1 है, यानी आपने classify कर दिया, 0.5 से extra है, सारे वो purchase उसे 1 value दे देंगे, और उससे कम है सीधे not purchase. सीधे आपका clear cut answer आएगा, purchase या not purchase. You can predict. Okay, so we'll meet on Wednesday. Maybe there will be a class. Like I'll check whether we can have one extra class in this week. Okay. I have. What is the course for midterm? It's regression and logistic regression. So in regression, you have already covered regression. We in 2 sessions we covered regression. We also covered sales promotion. We also covered advertisement. All those things, plus logistic. Up to regression and logistic regression. Yes, up to regression, logistic regression. So I have actually covered like half of logistic regression, all the concepts and everything. These 2 videos are really good, you know, to understand the basics of regression, logistic regression. The next thing that is left is like how you do it in R. Okay, how you set up that threshold, how you check that maximum likelihood, how you select that this model is correct or not, what is the probability that comes, and then you know you give that probability as 0.5 to 1 के बीच में जो आ रहा है उसे number 1 दे देना है, that is purchase or not. Only that thing is left, you know. We will do it in next session. And but you can always go through these videos, and you can go to other videos to understand how you can run. I'll also share that RMD file. You can try your hand on that. So that was all. Yeah, regarding that C2 component. So there will be one caselet. Okay, there will be one caselet. There will be 3 short answer questions, and there will be 20 MCQs. So this is the pattern for C2.
Okay. So that was all from my side. I'll give you one more data set. So it's up to you if you want to run logistic regression on that side by side or at the end of the session. But I'll advise just go through these videos and go through that RMD file and try running it. It's easy. Like we have to just run this code. Just 1 second. Yes, this code. GLM ऐसे करके किया था ना, वहां पे LM कर दिया था, यहाँ पर GLM कर दिया था. फैमिली बायनॉमियल लिया हमने और समरी मॉडल की ले ली, एंड देन it gives this residual deviance, p values, okay, all these things. We'll see what is AIC, what is residual deviance, what is null deviance. We'll discuss all these things. Okay, so that was all. All right then. See you on Wednesday then. I'll let you know if class. I'll let you know. Sorry? Yeah. Okay, bye. Okay, ma'am.